Hi guys, today I am going to discuss with you a very important topic. The name is the male gamete or the human sperm. So we not delaying much time, start it. We just know what is this. It's divided into three parts. The sperm, it is the structure and morphological structure of the sperm which are present in the human males, and it's generally divided into three parts: head, middle part and the tail. This is behind one is tail, and this portion, the neck, is called the middle portion, and the front one is the head. So head contains, on the tip of the head is called the acrosome, and this one dot is represent which called as the nuclear vacuole, and this is the elongated structure called as the nucleus, and this one is the centriole, and these dotted which are presented on both sides of the middle portion or the neck is called as the mitochondria, and behind this it is called as the flagellum, and the outer covering of this tail is called as the tail sheath. So these are the some points, these are the some names which are indicates. So we just know briefly each and every one what is the function of these points in the sperm. So acrosome, we take it first. Acrosome, what is the role of acrosome in the sperm? Acrosome generally contains some very important enzymes called as the hyaluronidase and the acrosine. These are the two enzymes which are present in the head or the acrosome of the sperm. And what is the function of these enzymes? I can explain in briefly. So when the sperm ejaculate or enter inside the vagina of the female, then after it start moving upward in the fallopian tube of the female and reach finally a very important destination where the ovum and the sperm are meet together, called as the ampulla. At that point when the sperms attached on the outer layer of the graphene follicle or the ovum, called as the zona pellucida layer, and when the million of the sperms are attached on this layer, so the acrosome, this one is the tip of the sperm, is called acrosome. Acrosome plays very important role at this stage. What they can do, it helps the sperm to enter inside the ovum by releasing these enzymes, and these enzymes penetrate, destroy this layer of the egg, zona pellucida layer, and the sperms can enter inside the zona pellucida layer. So this plays very important role. So million of the sperms when gets attached to this, at that time what happen, at that time regenerate the eggs regenerate the layer and check the entry of the sperms, so that the other sperms not enter from the same way. तो उसमें क्या होता है कि जो एग होता है वहाँ पे दोबारा से वो रिजनरेट कर लेता है एक लेयर, ताकि वो प्रिवेंट कर सके दूसरे स्पर्म जो है उस रास्ते से इंटर ना कर रहे हैं. तो देयर इज द टफ कंपटीशन बिटवीन द स्पर्म्स, अमंग द स्पर्म्स. So we can say that intra competition between the sperms, those sperms which are in healthy and which are in a quick reaction take place, so they can enter inside and finally reach up to the haploid nucleus of the ovum and meet with this. So that sperm called as the lucky sperm. वो जो sperm जो है वो जो पहले पहुंचेगा यहाँ पर न्यूक्लियस एग, फीमेल के एग न्यूक्लियस तक, हैप्लॉइड नंबर में रहता है, इस तक जो पहले पहुंचेगा तो उस स्पर्म को हम लकी स्पर्म कहते हैं, क्योंकि वो एक लकी है, वही रीच करेगा यहाँ पे और वही जो है जाइगोट बनाएगा और उससे ही बच्चा बनता है आगे. तो इसलिए इसको लकी स्पर्म के नाम से भी जाना जाता है. तो ये एंजाइम स्पेशली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पर्म को एंट्री में. तो मिलियन ऑफ स्पर्म जो होते हैं आप सभी जानते हैं इन सिंगल एजैकुलेशंस, व्हेन द मेल ejaculate inside the female vagina, there are million of the sperms are ejaculated inside in the single time.
मतलब सिंगल टाइम में जो है मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो एक टाइम में जो होते हैं वो चला जाते हैं अंदर। तो वो मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो इस लेयर के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन उनका टफ कंपटीशन रहता है। जो सबसे पहले इस लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा तो वही एंटर करेगा। तो इसमें की एंड लॉक का प्रोसेस होता है, मतलब कि जो ही एक स्पर्म एंटर करा उसके बाद तुरंत जो है एक लेयर आ जाती है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके दूसरी स्पर्म जो है वो एंटर ना कर पाए। तो ये फंक्शन रहता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता है। एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद एक दूसरा एंजाइम रहता है गैप्ट्स, गैप्ट्स बोलते हैं फुल फॉर्म इसकी है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एस। तो ये जो एंजाइम होता है ये टेल में होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्पर्म की मूवेबिलिटी में, मूविंग में। इट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूविंग ऑफ द स्पर्म फ्रॉम वेजाइना अप टू the fallopian tubes where the egg and the sperms meet to each other. So it and another one function is the male fertility. Male fertility and fertile of the male is also helpful these enzymes. तो ये दो चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला एंजाइम। उसके बाद कुछ जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज जो होते हैं ये एक फ्यूल का काम करते हैं। दीज आर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक्ट एज ए फ्यूल बिकॉज एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्म इट्स मूवेबिलिटी। तो ये जो है एटीपीज वगैरह जो होते हैं वो इसको देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एटीपीज वगैरह जो है यूटिलाइज करता है स्पर्म वगैरह, तो इसकी जो है आगे जो है वो मतलब बढ़ता रहता है, मूवेबिलिटी होती है, तो रीच करता है अप टू द एग। सो टेल का फंक्शन आप जान गए होंगे। टेल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूविंग और द मूवेबिलिटी, इट्स जस्ट स्विमिंग लाइक। सो finally the only one point is very important. Finally only the nucleus, haploid nucleus of the male is meet with the female nucleus, which are both are in the haploid number. When they both meet each other, the product is formed called as zygote. उससे ही आगे बच्चा बनता है। जब मेल हैप्लॉइड नंबर में न्यूक्लियस होता है, फिर मेल हैप्लॉइड एंड फीमेल हैप्लॉइड नंबर जो आपस में जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों मिक्स मतलब आपस में फर्टिलाइज करते हैं, मीट करते हैं। उसके बाद आगे जो प्रोडक्ट बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चा, मतलब आगे स्टार्ट हो जाता है। तो इधर से जो है वो प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है। ये जो ये जो सारा ओवरऑल प्रोसेस चल रहा है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में चल रहा है, एम्प्यूला बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब फीमेल में। तो उसके बाद जब इतना प्रोसेस हो जाता है उसके बाद फिर ये जो है आगे बढ़ता जाता है, और उसके बाद फाइनली रीच करता है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम यूट्रस में। फीमेल की यूट्रस जो है वॉर्म जिसको बोलते हैं बच्चादानी, वहाँ पे आ जाता है। और एंडोमेट्रियम एक लेयर रहती है यूट्रस की, इनर लेयर, तो वहाँ पे जो होता है ये अटैच करता है जाइगोट। तो उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है अप टू द 9 months। Then after completion of 9 months they come as a baby। तो उसके बाद में फ्लैजिलम आ गया, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। तो ओवरऑल ये जनरल ब्रीफ मैंने आपको डिस्कशन में बताया कि क्या क्या रूल रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, एंजाइम्स कौन कौन से वाइटल रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो होप आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करी होगी, इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट आल्सो प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद।